Good morning students, welcome back to SST's class. In our previous video, we have already started our lesson 23rd, that is government. And also we have seen the topic that what is government, what role does it play in our lives, and the need for a government and the functions of government. Right? These topics we have covered yesterday. So today we will see our next topic, that is levels of the government. Right? So you saw that the government has many functions to perform. Yesterday only we have seen the functions of the government. So what are the different functions? What are the different functions that government perform for us? Like maintenance of law and order, right? Maintain peace and order to prevent crimes such as thefts and the murders. It also defense of the country, means it is the job of the government to maintain the armed forces to defend the boundaries of the country. Again, next function is programs. Government arrange different types of programs to deal with the socio-economic problems such as poverty, unemployment, discrimination, etc. Again, provision of health services, means the government provide health services and education to the people. And next one is the rescue operations, right? We have seen during the times of natural disasters or the natural calamities like the earthquake, tsunami or the drought. So at that time government provides food, shelter and the health services to the affected people. So at the time of tsunami, it also arranged or carried out the rescue operations for the affected people. So these are the different functions which are performed by the government, right? So we have seen that the government has many functions to perform. So it is not possible for the government to be located at one place and trying to administer and control things all over the vast distances, right? So many functions that government perform for the people of the country. So it is not possible for the government that the government should be located at one place only and from there they are trying to administer and control things all over the vast distances. मीन्स अगर हम देखें, अगर हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, वो पूरे हमारे कंट्री के लिए है, मीन्स नेशनल लेवल पर काम कर रही है, तो वहाँ से उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है. अभी हमारे कंट्री में इतने सारे 29 स्टेट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस है, लाइक we have almost 739 districts in our country and thousands of small villages. और इन सब के लिए हमारे पास सिर्फ एक गवर्नमेंट है जो नेशनल लेवल पर काम करती है पूरे कंट्री के लिए. तो ये उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट रहकर वो हमारे पूरे कंट्री के लिए जो सारे फंक्शंस है वो लोगों के लिए परफॉर्म कर पाए. क्योंकि अगर वो एक नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं कंट्री के लिए और हमारे कंट्री में इतने थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल विलेजेस हैं और वो स्मॉल विलेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम वहाँ तक कैसे पहुँचाएगा अपनी, राइट? तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतने स्मॉल विलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लोग हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्जैक्टली, राइट? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू बी लोकेटेड एट वन प्लेस ओनली एंड ट्राइंग टू मैनेज और एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द थिंग्स फ्रॉम द वास्ट डिस्टेंसेस. So they have some elements spread out so that their functions could be carried out all across the country. So for that government distributed different departments so that their functions could be carried out all across the country. There means government is an organization and in that organization it has various departments or the divisions, we can say. Government has divided itself into the different sections and the different divisions, we can say, so that they can perform their functions and their functions could be carried out for all across the country. And therefore the government has decided its job and made different people responsible to carry out the duties at different levels, right? There are different departments and thousands of people, hundreds of people are working on it. Means we have a finance department, we have a defense sector, we have an education department, we have transportation, healthcare, water supply, electricity. So these all functions are performed by government. So government is an organization and it has divided itself into the different departments like finance, defense, education, like this. And there are different people responsible to carry out the duties at the different levels.
government has divided itself into the three levels, that is local level, state level and the national level. So local level we can say it is a district level also. So the government at the village, community, locality, town and the district level are known as the local government. They look after the affairs in these regions. They are responsible to see that the problems of the people in the village, locality, town or district are resolved. So the government who are working in the local level, so it is the duty of the government that they should solve the problems of the people who are living in that particular area or the district, right? Means the problems of the people are resolved, so they look after the affairs in these regions. Means a government who is working in the local level or the district level, so it is the duty of that government, so all the villages comes under that particular district, so that government is responsible for maintaining, means they have to look after the affairs in these regions, and that government is responsible to see that the problems of the people who are living in that particular village. So that government also has many functions to perform, like very small villages have gram panchayat. I think you have heard the word like gram panchayat. We have nagar panchayat, right? So very small villages have gram panchayat, and that gram panchayat also has various functions to perform for the people who comes under their area. So we have nagar panchayat. So nagar panchayat also have various functions to perform for the people, right? Means they are looking after the maintenance of roads, providing sanitation and the water supply, buildings of primary and the vocational educational centers, providing healthcare facilities to the people, and maintenance of public parks and the buildings, recording birth and death in the nagar panchayat areas, right? These are the different functions that nagar panchayat has to perform for the people, like means for us, because we are coming under their area. So this is known as the local level or the district level. Means the government who are working in the local level or the district level, they have to perform the various functions for the people, and they are responsible to see that the problems of the people should be resolved. Second one is the state level. So this is slightly higher than the local level, right? We all are living in a particular town or a district, and district comes under a state. So first one is the local level, second one state level is the slightly higher level than the local level. So they look after affairs of the state. So state government look after the affairs of the state, like local government look after the problems of their district only. So that like this, state government look after the affairs of the state level. They pass orders to the local government and also see that the local government does its job properly. So it is the duty of state level that they can pass the orders to the local government, because local government is the lower authority of the state level. So they can pass their orders to the local government, and they also see that the local government does its job properly. सो स्टेट लेवल जो है वो लोकल लेवल से हायर अथॉरिटी पे है, तो वो उनको ऑर्डर्स भी दे सकती है. स्टेट लेवल लोकल लेवल को ऑर्डर्स दे सकती है, कुछ ऑर्डर्स रहे तो वो दे सकती है. एंड ऑल्सो ये उनका जॉब है कि वो ऑर्डर्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं लोकल लेवल पे, ये देखने का काम भी किसका है, स्टेट लेवल का. You would have heard of the terms as Punjab government or Delhi government or the government of Rajasthan etc. So state level वो होती है जो हर एक स्टेट के लिए काम करती है, राइट. जैसे हमने सुना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट के लिए काम करती है. लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो गुजरात स्टेट के लिए काम करेगी, गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो अपने अपने स्टेट के लिए स्टेट लेवल पे काम करती है, राइट. सो दिस इज द सेकेंड वन, स्टेट लेवल. एंड द थर्ड वन इज नेशनल लेवल. This national level has the highest level of government, and they are responsible for the whole country. I told you national level means the highest level, means they are working for the entire nation or the whole country. So they are responsible for the whole country, means the national government, and they passes order to the state government on some matters and check that the state governments function properly, because it's the highest level. First one is the national level, second one is the state level, and the third one is the local level.
So it is the duty of the national level that they can pass some orders to the state government, and they also checks the state government they are doing their work properly or not. This is the duty of national level. Second level is the state level. I told you that state level is working for the, means there every state has its own government, right? Like Maharashtra government, Madhya Pradesh government, Rajasthan government, like this. So they are working for their state also, and also they can see that the local government also does their job properly, बिकॉज फर्स्ट वन है नेशनल लेवल, सेकंड स्टेट एंड लोकल. तो नेशनल लेवल पूरे कंट्री के लिए काम करती है, पूरे कंट्री के फंक्शंस परफॉर्म करने के रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड कुछ ऑर्डर्स वो किसको दे सकते हैं, स्टेट लेवल को. एंड ऑल्सो नेशनल लेवल ये चेक करता है कि स्टेट लेवल अपना काम प्रॉपरली कर रही है या नहीं कर रही है. जो सेकंड है स्टेट लेवल, वो अपने अपने स्टेट के लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आती हैं, छोटे छोटे विलेजेस आते हैं, तो उनका काम है कि अगर कुछ ऑर्डर देना है तो वो अपने लोकल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्टेट लेवल ऑर्डर दे सकती है. जैसे एक स्टेट में बहुत सारे विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो उनको भी ऑर्डर दे सकती है. एंड ऑल्सो ये स्टेट लेवल चेक करती है कि वो जो मीन्स जो लोकल लेवल पे है वो प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. मीन्स नेशनल लेवल स्टेट लेवल को ऑर्डर दे सकती है, एंड स्टेट लेवल लोकल लेवल को ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि हमारे कंप्लीट नेशन है, कंट्री है जो हाईएस्ट लेवल पर है. अब एक कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, हर स्टेट्स की अपनी एक गवर्नमेंट है. अब एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, विलेज आते हैं, जो उस पर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल और दी लोकल लेवल. सो दिस इज द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड दी लोकल लेवल. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज एंड दी गवर्नमेंट. The government of a nation also needs to frame some laws and rules. All the citizens have to abide by these laws. I told you yesterday about the organs of a government, right? In that, the functions of the government are carried out by the three main organs. First one is the legislature, second one is the executive, and third one is the judiciary. So in the first one, the legislature, which is the law making body of the government, means a group of people who have the power to make and change the laws in the legislature. Second one is the executive, so the executive which implements the laws. And the third one, the judiciary, which ensures that the laws are followed by the followed both by the government and the citizens. So these are the organs of the government. So laws and the government means government make laws and we follow them, right? Government make laws and we follow them. So जो ये laws बनाती है गवर्नमेंट, वो कहाँ पर बनाती है? लाइक दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो इलेक्शंस में हम जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, राइट, वो लोग उस पार्लियामेंट में जब बैठते हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं हम लोगों के लिए, राइट? गवर्नमेंट मेक लॉज एंड वी फॉलो देम. So the government of a nation also needs to frame some laws and rules, and all the citizens have to abide by these laws. Abide means the laws which is made by the government we have to follow, or we accept that laws and we have to follow that laws. We cannot, means we cannot tolerate that laws. It is the duty of all the citizens that the laws which are made by the government and the citizens of that country have to follow them. For example, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19 के वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट ने कैसा लॉ बनाया था कि मीन्स हम सबको घर के अंदर ही रहना है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट? ये लॉ सबके लिए सेम था. ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ हिंदू लोग हैं उनके लिए लॉ है, वो घर में रहेंगे, एंड बाकी जो अदर कास्ट के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जैनिज्म, बुद्धिज्म या मुस्लिम्स, वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ हिंदू है वही घर में रहेंगे. ऐसा नहीं था. जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था वो क्या था, सारे सिटीजन्स के लिए सेम था, और हमें वो क्या करना था, फॉलो करना था. हम उसको इग्नोर या टॉलरेट नहीं कर सकते थे. वी हैव टू एक्सेप्ट एंड फॉलो दैट रूल्स एंड लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट. अगेन एक और एग्जांपल अगर लाइसेंस का देखें, तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको गवर्नमेंट क्या करती है, पनिश करती है. मीन्स हमें उसके लिए फ़ाइन पे करना पड़ता है. ऐसा तो नहीं है कि एक कास्ट का है, अगर कोई हिंदू है तो उसको फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा या उसको भरना पड़ेगा, और कोई अदर कास्ट का है उसको नहीं भरना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता. सबके लिए लॉज एंड रूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. All the citizens have to follow all the laws which are made by the government. So since every citizen is governed by the same laws, means laws are same for all
all the people. So it is easier for the government to ensure that there is no discrimination, राइट. मीन्स लॉज को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लोगों में कि कोई अलग कास्ट का है, कोई दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है तो इसके लिए लॉ अलग होगा, ऐसा नहीं है. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू द लॉज. अ पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल जो हमने लाइसेंस का देखा, अगर हमने गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास लाइसेंस होना कंपलसरी है, अगर फिर भी कोई गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस नहीं है, एट दैट टाइम गवर्नमेंट हैज राइट टू पनिश द पीपल, राइट. So a person who breaks the law can be punished by the government. Government has that power. So he can, means government can punish the people. So similarly, if a citizen feels that the government is not fulfilling its duty or feels he or she is being treated unfairly, so he or she can approach a court of law and seek the justice. अब हमारे कंट्री में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी बराबर नहीं कर रही, राइट. जैसे हमने बढ़ाया कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है और हम वो फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है सपोज फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने लॉज बनाए और हम वो फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी सिटीजन उसको फॉलो नहीं कर रहा और हम फॉलो नहीं कर रहे, उसके बाद गवर्नमेंट भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं हो रहा. तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉज बस ऐसे ही बनाए गए, गवर्नमेंट ने बना दिए, हम वो फॉलो भी नहीं कर रहे और हम फॉलो नहीं कर रहे, उसके बाद गवर्नमेंट भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, राइट. तो जब लोगों को ऐसा लगता है, हमारे कंट्री के सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनकी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही है या उनके साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, गलत हो रहा है, तो एट दैट टाइम ही और शी, मीन्स जिनको लगता है वो कोर्ट में जाके उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है या गलत हुआ है. So the court of law then gives orders about what needs to be done. Then it is the duty of court that court of law gives order about what needs to be done. अब कोर्ट ऑर्डर देता है कि जो भी किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है, ये परमिशन कौन देता है, कोर्ट देता है. For example, if a person feels that he or she has been denied admission into an institute because she or he belongs to a particular religion or caste, so at that time he or she may seek justice by approaching a court of law. अब किसी को ऐसा लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज में मेरे कास्ट या रिलीजन की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन which is related to a caste or religion. So at that time he or she can go to the court or he or she may can seek the justice by approaching a court, right. At that time जिसके साथ ये हो रहा है, लड़का या लड़की, तो वो उस टाइम पे कोर्ट में जाके उसके लिए अगेंस्ट मीन्स फाइल कर सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमारा रिलीजन या कास्ट को लेकर हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है एक पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल में. सो दिस इज द लॉज एंड द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड वी follow them. So today we will stop here. We will see our next topic in our next video. Thank you and have a good day.